Mountain Dew, यार हैं तो पार हैं। Guys, मेरी losing streak तो खत्म कराओ। हम आ गए हैं जीतने के लिए। चलो चलो खेल खेल on your left गेमर होना इतना आसान नहीं है ब्रो। जब ओपोनेंट्स और ये सोसाइटी हो चैलेंज करने को तैयार, खेल नहीं सकते। तो ब्रिंग इट ऑन कहकर खुद को अनलीश करना पड़ता है। सब एनिमीज को एक साथ नॉकआउट करना पड़ता है। जिसमें दम हो खुद को अनलीश करने का, वो हर चैलेंज को कॉन्कर करता है। जो सेट करते हैं अपने पैशन की टोन, वो खुद को अनलीश करके कहते हैं ब्रिंग इट ऑन। तो फिर अब जीत ऑन रिपीट का नारा लगेगा, क्योंकि गेम बर्ड पर सिर्फ ई गेमिंग का डंका बजेगा। ये पैशन की टोन यहाँ ई टूर्नामेंट्स और स्ट्रीमिंग का है सीन ऑन। सो विद गेम बर्ड, ब्रिंग इट ऑन। Good evening everyone and assalamu alaikum. Welcome to Duo Gamers Arena. मेरा नाम राजा है and I'm here joined with Maz. Yeah, we're at the final four of the qualifiers now, and so far there's been some great matchups. Now it's down to the four of the best are remaining, and let's see how that goes. बिल्कुल, we've had a great set of matches अब तक, और उसमें हमने मतलब काफी different क्या कहते हैं players को knockout होते हुए देखा है. For example, Daniel Munir, who's a favorite in the scene, who's been very consistent with this game, but since the launch of FC24, we've seen Daniel Munir not be at his best, and शायद ये एक early game preference वाली बात हो, लेकिन it seems like we are not seeing Daniel Munir in the final four as we take a look at the brackets. तो जहाँ तक हम brackets की बात करें, हमारे पास qualifier number 1 is an insane matchup. We've got Abdullah versus Omar Shaukat. A little about Omar Jan. Omar Jan is one of FIFA heritage in Pakistan. Matlab, he has been consistent in practically all the FIFAs that have had been, in competition in Pakistan. And we've also got Abdullah, जिसको काफी scene में छोटू के नाम से बुलाया जाता है, because Abdullah was a part of Salty Sports, और जहाँ पे उनका जो output था उसमें he was always considered a tail ender. But seeing him develop his skill sets now, and अब वो qualifier के लिए final में आ चुके हैं, and he's about to play his game against Omar Jan. Qualifier number 2 में हमारे पास है Ezan, Rehman और Ebrahim, and they've also had their fair share of games, and they're there ready to compete. Looking at the prize pool total, हमारे पास 1 million rupees का prize pool है, with the first place getting 500,000, second 250,000, third place 150,000, fourth place 100,000. Final four में आके इन चारों के पास guaranteed money तो आई गया, and it is a good amount of money for any sort of player. So well done to all four of them to getting to this point, but now it's all about getting to the final and winning it and see how that goes. बिल्कुल, और FC24 का जो मेटा है, it's completely different to that of FIFA 23. एक तो सबसे पहली बात तो ये कि सारी ब्रांडिंग चेंज होगी, और फिर ऊपर से हर साल ये जो है वो गेम के अंदर डिफरेंट चेंजेस लाता है, और इस बार FC24 के अंदर हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा हद तक इन्होंने थ्रू बॉल्स को नर्फ कर दिया है. तो मास, व्हाट डू यू थिंक, ये हम इन प्लेयर से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या गेम होगी इनकी? प्लेयर्स आई फील लाइक थोड़ा ज़्यादा केयरफुल होंगे, वो ज़्यादा मतलब इतने रन्स नहीं निकाल सकते अब इतना आसानी से जितना आप 23 में निकाल सकते थे. You just have to be a lot more careful with the balls you play. Over the top through balls are still good, but normal through balls जो होती हैं जो कि ground पे you have to change that. वरना cutbacks are still good in the game, तो byline पे जाके cutback करना, that's still a meta and very effective अभी भी. और जो हम मेटा की बात करें तो we've also got the teams over here. We've got France, and that's a great pick for FC24. और इसके अलावा मतलब मैनचेस्टर सिटी का स्क्वाड जो है वो भी बहुत खतरनाक स्क्वाड है.
जो मतलब हम प्रेफरेंस पे देखेंगे. Okay, now we'll move to the first game between Abdullah and Omar. So obviously right side पे we've got Abdullah and on the left we have Omar Jan और दोनों की preference France है और and we're started. First game of the qualifiers, we've got the games going with the possession on towards the France kit that is white और यहाँ पे Abdullah है उनके पास ball in hand है. Abdullah ने quickly attack अपना start करने की कोशिश की, but that didn't go as planned. लेकिन उनको फिर से ball मिल गई है. He's just trying to play those long through balls. अभी से पता चल रहा है कि ground पे through balls नहीं कर पा रहे हैं, तो they're just trying to make those lob through balls. आज जैसा आपने mention किया था कि Abdullah जो है he's going for the over the top through balls rather than the grounded through passes. और मतलब यही है कि वो अपनी क्या कहते हैं गेम completely उस पे base off कर रहे हैं. हाँ मतलब काफ़ी चेंज हुआ इस साल मेटा यूजुअली पिछले क्योंकि 22 और इतना प्यारा थ्रू बॉल पास है बाकी तरफ से एंड ही शूट्स और ये गोल हुआ उमर जान की तरफ से और हम देख सकते हैं अब्दुल्ला कंफ्यूज ओवर देयर एज एम्बापे सेलिब्रेट्स एंड दे गो इनटू टीम मैनेजमेंट क्योंकि अब आएंगी टैक्टिक्स की चेंजेस बिकॉज इतने अर्ली ऑन इतना क्लोज गोल ओवर द टॉप थ्रू बॉल आया उमर जान की तरफ से और अब इट्स ऑल ऑन अब्दुल्ला सारा प्रेशर उनकी तरफ है एंड दे हैव टू मेक a new undertaking. That was a very quick counter attack और यही इस गेम की बात है. फ्रांस के पास उस तरह के प्लेयर्स भी हैं उस काउंटर अटैकिंग फुटबॉल को सपोर्ट करने के लिए. विद इन 5-10 seconds उसका एक पूरा अटैक लाइंड अप था एंड ही गॉट द बॉल इन द बैक ऑफ द नेट. और इधर हम एक डिफेंसिव प्रेफरेंस की बात करें तो अब्दुल्ला ने सलीबा को चूज किया है ओवर द पॉसिबिलिटी ऑफ ओपामेकानो एंड आई फील लाइक कि इसमें उसकी हाइट एक बहुत बड़ा फैक्टर है. हालांकि ओपामेकानो इज अ ग्रेट प्लेयर इन हिमसेल्फ एंड ही इज वेरी गुड इन फीफा बट सलीबा हमने पिछले साल भी देखा था फीफा के अंदर ही वाज अ ग्रेट डिफेंडर टू हैव इन योर अल्टीमेट टीम एंड ही वाज अ ग्रेट डिफेंडर टू प्ले विद क्योंकि उसकी बॉल के ऊपर क्या कहते हैं जो इफेक्ट था इट वाज बेटर देन दैट ऑफ ओपामेकानो. Yeah, Saliba for Arsenal and in FIFA उसकी ball playing ability काफ़ी अच्छी है and a lot of FIFA players as well just like modern football in real life want that. उनको वो बॉल पे सिक्योरिटी चाहिए होती है ताकि वो आराम से दे कैन प्ले आउट फ्रॉम द बैक वो आराम से पासेस निकाल पाए. तो आई फील लाइक दैट कुड बी अ बिग फैक्टर इन चूजिंग सलीबा ओवर उपमेकानो. एंड इवन इफ यू लुक एट द विंग्स दोनों प्लेयर्स कॉमन खिला रहे हैं एंड दैट इज आल्सो सॉरी दोनों प्लेयर्स कॉमन को नहीं प्रेफरेंस दे रहे. दे आर चूजिंग क्या कहते हैं डिफरेंट विंगर्स ओवर देयर एंड आई थिंक दैट कम्स डाउन टू हाउ कॉमन और उसकी जो शूटिंग इट्स नॉट प्रेफरेंशियल. हालांकि उसके पास पेस भी है उसके पास वो स्किल सेट भी है बट वी सी दैट दे वुड मच रादर हैव हिम प्ले ऑन टुवर्ड्स दैट लेफ्ट विंग साइड रादर देन द राइट वन एंड दे आर प्रोबब्ली सैक्रिफाइसिंग देयर जिरूद एज हम देखते हैं कोलुमुआनी ने बॉल पास की और अभी पोजीशन हम जैसा अब्दुल्ला के पास देख रहे हैं एंड ही इज ट्राइंग टू मेक दोस थ्रूज लेकिन वो प्रेसिंग जो आ रही है उमर जान की तरफ से इट इज शटिंग डाउन एवरीथिंग. हाँ कोमन वाली बात जहाँ तक आती है दैट इज डाउन टू आई फील लाइक वो इन्वर्टेड जो विंगर्स होते हैं वो कराना चाह रहे हैं कि राइट फुटेड लेफ्ट साइड पे खेले जस्ट सो दे कैन कट इन एंड मे बी फिनिश शॉट कर सकें या दूसरी तरफ दे कैन क्रॉस इन. दैट कुड बी देयर गेम प्लान बट अभी गेम के साथ ही पता चलेगा कि हाउ दे यूज देयर प्लेयर्स क्योंकि कुछ सोच के उन्होंने इस तरह रखा होगा. And as you talk about using their players, Mbappe gives a through ball towards Griezmann. Abdullah has a chance for an attack, goes for a shoot, but is far off wide. एक अच्छा अटेम्प्ट था ये अब्दुल्ला की तरफ से और वापस उस पर ही बात आती है कि आपकी पर्सनल प्रेफरेंस क्या है. हमने देखा कि जिरूद को इन्होंने कम्प्लीटली बेंच किया हुआ है और डेम्बेले को प्रेफर किया हुआ है और हम सबको पता है कि डेम्बेले इज फीफा हेरिटेज 5 star. He's got the pace, he's got the lankiness required for a winger और वो मतलब एक जनरल प्रेफरेंस रही है फीफा में प्लेयर्स की तरफ से. डेम्बेले हर साल एक मेटा काट रहा है लाइक अलोंगसाइड आई वुड से स्पेशली स्टार्ट ऑफ द फीफा में जब इतने प्लेयर्स अल्टीमेट टीम की अगर बात करें जब इतने प्लेयर्स नहीं आए हुए होते इतने अच्छे कार्ड्स नहीं आए हुए होते तो हर किसी की सारी टीम में तो डेम्बेले वगैरह होता ही होता है एंड उसके वो 5 star है जस्ट लाइक यू सेड ही इज क्विक ऑन द बॉल उसकी ड्रिबलिंग भी बहुत स्मूथ है ही हैज द परफेक्ट बॉडी टाइप तो ही इज रियली प्रेफरेंशियल फॉर और कीपर्स में हम देख रहे हैं दोनों तरफ माइनान ही खिलाया जा रहा है बिकॉज यूगल और ही इज नॉट दैट गुड एनीमोर एंड क्वाइट फ्रैंकली माइनान और उनकी जो परफॉर्मेंस थी पिछले साल सेमीफाइनल्स तक गए थे एसी मिलान की तरफ तो ऑब्वियसली हिज फीफा रेटिंग गॉट बेटर एज वेल
और पिछले साल भी हमने देखा था कि अल्टीमेट टीम के अंदर माइनान जो थे, ही वाज गेटिंग अ लॉट गोइंग फॉर हिम, काफी ज्यादा उनको कार्ड्स भी मिले थे और काफी ज्यादा उनको टीम ऑफ द वीक्स भी मिले थे, तो माइनान इज अ गुड कार्ड टू हैव एज वेल. Yeah, Mainan is an excellent card in FIFA. Through like within the last 2 years, especially, उसने अपना उसका come up हुआ है in real life and in FIFA. Maybe उसकी उस हिसाब से rating बढ़ी है and काफी लोग उसको choose करना शुरू हो गए हैं as their main keeper. And Lloris, on the other hand, because he's been on a constant downhill for quite some time. So FIFA में भी वही है, he's not that good anymore. Plus Mainan on the ball भी बेहतर है. He comes out for crosses, which a lot of players want in their team. कमिंग फॉर क्रॉसेस, ऑब्वियसली कामाविंगा एक बड़ी प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट है प्लेयर्स की, और वो भी पिच की तरफ हैं क्योंकि दोनों कामाविंगा को एक पिवटल पोजीशन पे डाला हुआ है दोनों प्लेयर्स ने, जिधर वो प्रेसिंग भी कर रहा है और वो अटैकिंग भी कर रहा है, प्लेइंग दैट मिडफील्ड रोल टू इट्स परसिस्टेंस. Yeah, Kamavinga को भी इस साल बहुत बड़ा रेटिंग बूस्ट मिला है and he's been crucial. And here's a हाँ okay, Kamavinga को इस साल मतलब रेटिंग बूस्ट काफ़ी अच्छा मिला है मैड्रिड के लिए and उसका लास्ट ईयर काफ़ी अच्छा गया था, तो a lot of players might choose him over some other French midfielders now. And as Omar comes in towards the box looking to cut back, it is defended really well by Abdullah, जो कि रोक पाते हैं, and Abdullah trying to go for that counter over there through Dembele. Griezmann has the ball, he passes it on towards Mbappe. Abdullah has an open goal opportunity, can he go? And he goes for a shoot, but it's deflected well by Maina, and another opportunity, but it is again saved really well, parried away by Mike Maina. That was a very good उसके chance. साथ ही नहीं पाता हमारा फर्स्ट हाफ खत्म होता है of the best of 3 where we see that उमर जान is now leading, और उमर जान ने काफ़ी हद तक अपने आप को सीमेंट करके रखा हुआ है. दोनों अपनी तरफ से अटैक किए जा रहे हैं दोनों प्लेयर्स, बट उमर जान विद द अर्ली लीड कमिंग ऑन was able to sustain this half really well. तो अब सारा प्रेशर अब्दुल्ला की तरफ है, बेस्ट ऑफ 3 है, एंड यू शुड ऑलवेज बी ट्राइंग टू विन योर फर्स्ट गेम ताकि आप प्रेशर दूसरे बंदे की तरफ डाल पाओ. तो फॉर छोटू it is an interesting affair. Yeah, I mean मेरे हिसाब से तो काफ़ी बैलेंस हाफ गया है ये and both players और ये did किक ऑफ very लिस्ट के well. लिए जाने की कोशिश कर रहे हैं उमर जान, बट ही स्टॉप देयर इमीडिएटली as Saliba passes the ball on towards Coman. And here's Mbappe on the counter attack, और वो कट बैक प्रॉपर्ली यहीं पे एक्चुअली नहीं करते लेकिन उनको कॉर्नर मिल जाता है. Or Dembele now trying to bring the ball on towards the box hand side, looks for an opportunity to pass, goes for a shoot, और ये बहुत बड़ा रिस्क था ये शूट, because अगर बॉल अंदर फिनिश कर जाती तो the game would be in Abdullah's favor as it would be tied 1-1, लेकिन वो Dembele की शूटिंग नहीं कंप्लीट हो पाई क्योंकि अब उमर जान will be looking to counter attack as he goes on towards that through onto the right hand side of the wing, और Dembele वहाँ पे कट करते हैं. Rabiot looking for a pass opportunity just misses it, लेकिन इधर एक फ्री किक है. ये काफ़ी अच्छी पोजीशन में फ्री किक है. इस गेम में फ्री किक्स कर दिए हैं तो players can use them to their advantage and get a goal in. और इधर हम इतना स्किल मूव्स की यूटिलाइजेशन नहीं देख रहे दोनों की तरफ से बिकॉज जरूरत नहीं पड़ी, बट इट सीम्स लाइक Griezmann is free and Kamavinga passes it on towards Griezmann as Abdullah gets another chance and he scores, and it is now 1-1 as Abdullah comes back into the game, scores a goal as Umar Jan goes for another kick-off glitch. Kolo Muani has the ball but it is defended well as Mainan passes it on back towards Koundé. Yeah, that was ये kick-off glitch still in the game, still being used by players, pro players especially. ये अभी भी उसको abuse करना चाह रहे हैं and ये पिछले 2-3 साल ये से हटाना ही नहीं चाहता, सीधी बात है. या वो प्लेयर्स को बस चाहते हैं कि उनको एक किक ऑफ पे एडवांटेज मिल जाए, वो क्विक गोल वापस कर पाए ताकि गेम इंटरेस्टिंग रहे. हाँ, लेकिन इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग से क्योंकि किक ऑफ ग्लिच एक ऐसी चीज़ है जो मतलब टू एन एक्सटेंट आप कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि ईए के अंदर आपने खिलानी है हाई बैक लाइन और किक ऑफ ग्लिच इज मोस्ट वनरेबल अगेंस्ट अ हाई बैक लाइन. तो एक जनरल प्रेफरेंस है और जनरल प्रेफरेंस में बात करें तो इधर डेम्बेले गोस फॉर अ हेडर बट इट इज सेव्ड रियली वेल बाय माइनान. और यही एक दूसरे की तरफ से प्रेशर आ रहा है दोनों के ऊपर क्योंकि अब है स्कोर 1-1 एंड वी आर एट द 60th मिनट ऑफ द फर्स्ट गेम. तो दोनों प्लेयर्स आर ट्राइंग टू लुक फॉर दैट अपॉर्चुनिटी बिकॉज आगे फिर जब एक्स्ट्रा टाइम में जाते हैं तो उधर प्लेयर्स की थकावट और आपके ऊपर जो प्रेशर आर टू वेरी की फैक्टर्स दैट लीड टू
a negative decline as Diaby goes towards the left-hand wing, trying to look for an opportunity, but it is defended well by Upamecano. ये गेम अब ऐसी पोजीशन पे आ गया कि both players just don't want to lose, they want to get the goal, and ताकि फिर वो बाकी जो time है remaining 25-30 minutes जो है वो बस they can just defend the rest and see the game out. दोनों को ये गेम नहीं हारना, दोनों को अपने पहले win, and here's a very good chance for Mbappe, but it is saved, and it was a very good attempt, but just couldn't get the finish in. फिर से मौका मिले, Coman scores and Abdullah wins the first half as he makes it 2-1. छोटू उमर जान के लिए एक अज़ाब बनते हुए डेविड वर्सेस गोलायत का सिनेरियो इधर नजर आते हुए, क्योंकि अब उमर जान की तरफ से अटैक आ रहा है. Mbappe is open over there but it is defended well by Saliba. जैसे हमने बात की थी मास के Saliba is a great choice for a center back and he's proving his worth as Theo Hernandez now has the ball on towards that left wing, trying to make an opportunity, going for that modern fullback role, trying to look for a cross. And he finds one, but is barely missed. और अब्दुल्ला के impressions देखने में जो हमें मजा आ रहा है वो मुख्तलिफ है और इस वक्त अब एक उमर ने first half तो जीत दिया था, he got 1-0 up, लेकिन Abdullah has made a great comeback in the second half. He's scored 2 goals back and he's in the lead now. और इधर जो अब हम सेटअप्स देख रहे हैं obviously they're going to go for an ultra attacking formation over here क्योंकि उमर जान now अब बॉल उनके कोर्ट में है, it's a 2-1 score line and they need a goal and उमर जान will do whatever is possible, full press forward, highest line possible because अब सिर्फ 20 मिनट रह गए गेम में और उन 20 मिनट को काउंट करने के लिए they will have to do their due hardest. Yeah, वही tactical changes are coming into play क्योंकि उमर does not want to lose the first game क्योंकि जो भी first game हारता है उस पर naturally ज़्यादा pressure आ जाता है and neither one of those players want that जब stakes इतने high especially. तो अब वही tactical changes for like plus changing the formation थोड़ी बहुत is necessary at this point. और Klaus brings the ball in but the touch from Mbappe is not good enough क्योंकि अब फिर से अटैक आता है Diaby की तरफ से राइट हैंड विंग पे और Diaby is able to cut really well as he has an open field in front of him, looking for an opportunity to pass, goes for a cross but it is defended well as the parry is saved just there by Mainan. और इस तरफ अब उमर जान की तरफ से भी प्रेशर आना शुरू हो गए हैं. दोनों प्लेयर्स एक कट थ्रोट गेम स्टाइल के साथ. Mbappe has the ball and he goes for a shoot and it is a goal as now Abdullah makes it 3-1 for Umar Jan and Umar Jan trying to look for that kick off glitch but वो मिल नहीं पाया उनको फिर से. या वही जो अभी हमने गोल देखा उसमें हमने एक चीज़ वही देखी जो थ्रू आउट 23 हमने देखी थी कि स्टेप ओवर से जो बूस्ट मिलता है नियर द बॉक्स या इनसाइड द बॉक्स, उसने अब्दुल्ला ने वही यूज़ करके एम्बापे से थोड़ा सा बूस्ट दिया एंड उसको उसकी वजह से स्पेस मिल गई एंड ही कुड स्कोर दैट गोल इजीली फिर एंड में. स्पेसेस तो मिल रही हैं लेकिन डिफेंडर्स भी रुक नहीं रहे क्योंकि अब्दुल्ला फिर से अटैक लिए जा रहा है बट इस बार एक वियर्ड किक की तरफ से एक और मौका मिला और अब कॉर्नर है और ग्रीजमैन गोस क्विक विद द कॉर्नर लेकिन डेम्बेले उसको फेंड ऑफ कर पाता है आराम से. अब वो मौका ढूंढेंगे पास ढूंढने के लिए जैसे उनको कोलो मुआनी मिलता है और ग्रीजमैन ट्राइज टू पास द बॉल बट कामाविंगा इज देयर टू डिफेंड इट. और मास हम पहले भी बात कर रहे थे किस तरह कामाविंगा को ये लोग एक ऐसे पोजीशन पे डाला हुआ है जिधर वो अटैक भी कर सकता है और वो पास भी कर सकता है क्योंकि अब ग्रीजमैन के पास बॉल है एंड इट्स अनदर गोल एंड अब्दुल्ला making taunts on the webcam, giving thumbs up as he makes it 4-1 against Umar Jan. Abdullah just took a little bit of time to get into the game, लेकिन अब जब once he's got into the flow, उमर का गेम समझ गया, he's just taking advantage of it and he scored 4 easy goals. और उमर जान अब तो प्रेशर महसूस कर रहे होंगे. He's got 6 minutes to score 3 goals to take it to extra time और यहाँ लग नहीं रहा कि extra time की तरफ जाएगा क्योंकि अब उमर जान एक और अटैक के लिए जा रहे हैं क्लाउस एम्बापे को पास करते हुए लेकिन कामाविंगा the man that is everywhere is able to intercept it really well. That was just a short an attempt ताकि वो अब्दुल्ला को हो सकता है उमर को कुछ चांस मिल जाए maybe something जिससे वो कुछ कर पाए but nothing could come of. बिल्कुल. और ये मतलब this has been a very interesting game
to say the least, from both the teams. As again, Abdullah not stopping the attack at all. 30 seconds to go. क्या कुछ उमर जान कोप अप कर सकते हैं, क्योंकि फिलहाल लग नहीं रहा, because Abdullah has had this game on the choke hold since the beginning of the second half. 4-1 of game 1, and it feels like it's game over on game 1 as Abdullah is able to win the first game of the qualifiers. क्या गेम थी ये, मतलब अब्दुल्ला इतना स्लो स्टार्ट के साथ और इतने, अब उमर जान की तरफ से इतना हमारे पास अर्ली गोल आया था कि वी वर एंटिसिपेटिंग समवॉट ऑफ अ वॉश आउट, एंड अब्दुल्ला वाज एबल टू कुक अप अ स्टॉर्म, और वो सेकंड हाफ के अंदर 4-1 करके बेस्ट ऑफ 3 की लीड ले चुके हैं. या शुरू में तो बिल्कुल यही लग रहा था कि उमर माइट हैव द गेम इन कंट्रोल क्योंकि ही गॉट द लीड, लेकिन वो बस उसके बाद गोल्स ही कुडंट फाइंड दोस एक्स्ट्रा गोल्स जिससे आपको थोड़ी सिक्योरिटी मिल जाती है. एंड अब्दुल्ला जस्ट टुक एडवांटेज ऑफ दैट. उसने एक के बाद एक एंड देन ही एंडेड अप गेटिंग 4 and winning the game comfortably in the end. और मतलब ये भी हम देख सकते हैं कि जो tactical changes उमर जान की तरफ से आई थी, they were very attacking oriented, और उसकी वजह से वो जो डिफेंसिव बैकलाइन थी उमर जान की वो कॉम्प्रोमाइज हो गई थी, और ये एक रिस्क था उनकी तरफ से, और उस रिस्क को completely मैक्सिमाइज करते हुए अब्दुल्ला ने बाकी गोल स्कोर किए थे, and he was able to cement himself really well, and he was able to win the games really well. और ये जो फ्रांस की प्रेफरेंस है ये हम देखते आ रहे हैं, ये कामाविंगा का रोल हम देखते आ रहे हैं, ये बहुत प्रिस्टीन है, एंड बोथ द प्लेयर्स आर यूटिलाइजिंग इट रियली वेल. यही चीज़ होती है जब आप व्हेन यू गो, जब आपकी 1-2 गोल लीड का डेफिसिट आ जाता है तो आपको यही होता है, आपको रिस्क लेना पड़ता है. समटाइम्स इट पेज ऑफ, यू कैन गेट अ गोल और 2, कभी वो रिस्क जो है बैकफायर कर जाता है, जैसे हमने देखा उमर के लिए इस दफ़ा बैकफायर कर गया. एज फार एज कामाविंगा गोल्स, उसका वर्क रेट बहुत अच्छा है, अटैकिंग, डिफेंसिव, और हमने वही देखा 4-4-2 में उसको एज अ सेंट्रल मिडफील्डर खिला रहे थे, एंड इट पेड ऑफ वेरी वेल. It's a classic FIFA thing to do. Play the player you know can play there, not the player that's got the form there. हमेशा से हमने देखा है, अल्टीमेट टीम में भी हमने देखा है कि हमेशा लोग गेम्स के अंदर अपने वो प्लेयर्स प्रेफर करते हैं जो उस रोल को फिट करते हैं, नॉट दैट इट्स देयर नेचुरल पोजीशन. जैसे हमने बात की कि कोमन को इंस्टेड ऑफ द राइट विंग दे वर बीइंग प्लेड ऑन द लेफ्ट विंग. Mbappe was naturally a left winger for the French football team, was playing on strike. Griezmann playing that attacking midfielder role as well as that winger role for some people. तो मतलब ये हम एक variety देख रहे हैं जो कि players to the table लाते हैं, और उसी variety से they're able to, you know, do something different. Yeah, वो एक players की versatility है जो कि in real life पे होती है, and in FIFA. And now we've got a second matchup coming on as Omar Jan takes on Abdullah, and he must win this game to proceed further into the game. Yeah, I'm really looking forward to seeing कि उमर क्या कर पाते हैं इस गेम में, whether he's able to bring himself back after losing 4-1 in the first game. I'm sure he's still confident, he still believes in himself as he should. Final four तक आना बहुत बड़ी बात है, तो let's see how that goes. And as we kick off, I just want to mention how FIFA के पाकिस्तानी players उनको बहुत शौक है गाने लगा के गेम्स खेलने का. हमने देखा है कि ऑनलाइन लैंड्स के अंदर भी प्लेयर्स हेडफोन्स लगाते हैं गेम्स खेलते हुए because they want to be in that zone. और जैसे हम देख रहे हैं अब्दुल्ला को जैम करते हुए अपने गानों को as he goes for an attack with Koeman on towards that left hand side. Yeah, I feel like गानों से एक extra motivation मिल जाती है. कुछ लोगों की concentration lose होती है, but for a lot of players it's just extra motivation which they use to their advantage, और थोड़ा calming के लिए भी, nerves calm करने के लिए भी use होती है, तो they're just doing that. काम नर्व्स की बात की जाए तो अभी फिलहाल अब्दुल्ला के नर्व्स काम नहीं है, क्योंकि उमर जान की तरफ से एक अटैक आया है, एंड इट वाज अ डेडली अटैक एज ही गोस फॉर अनदर स्वैप. वो अपने सेंटर बैक को अब विंग पे देखेंगे to cement something as he goes for a corner over here. ये हमने लास्ट गेम में भी देखा था, उमर जान स्टार्ट में तो कंट्रोल में था एंड he got the early goal as well, लेकिन उसके बाद जो है he just could not build up on that. अगर वो इस दफ़ा कर पाते हैं, I'm sure this could be a great matchup. And as the corner is wasted, Mainan passes the ball on towards Griezmann, और एक काउंटर का अपॉर्चुनिटी मिल रही है, और इतना प्यारा ओवर थ्रू बॉल है डेम्बेले की तरफ से, और वो स्प्रिंट करते हुए जाते हैं, एंड ही इज ओपन एंड ही फ्री द कीपर, गोस फॉर द पास, बट सलीबा और उनकी लंबी टांगे और लंबी हाइट कम्स इन क्लच. या वो बस चाह रहे थे वो किसी तरह कोमन को निकाल दें बॉल, और he just tried to play it safe, लेकिन he just couldn't get the final pass in. बिल्कुल, और मतलब हम देख रहे हैं कि कितनी
इंटरेस्टिंग सेट ऑफ गेम्स खेली जा रही हैं इधर, क्योंकि दोनों प्लेयर्स डिफरेंट स्ट्रैटेजीज सिमिलर फॉर्मेशंस में खेल रहे हैं, और मतलब इनके एवरी फीफा एंड एवरी FC24 प्लेयर हैज अ डिफरेंट नीश दैट दे रियली लाइक। और मतलब कुछ बड़ी काउंटर अटैकिंग गेम खेलते हैं, कुछ फाइट द बस खेलते हैं जो काफ़ी डिरेंज्ड होते हैं। लेकिन फिलहाल अभी जो है हम देख रहे हैं कि इधर सिर्फ पोजेशन बेस्ड गेम चल रही है। A lot of L1s are being thrown out, a lot of fake runs are being made. या दोनों पोजीशन प्लेस खेल रहे हैं, बट दोनों इस तरह के नहीं है कि दे लाइक प्लेइंग फ्रॉम द बैक टू मच। वो डायरेक्ट ज़्यादा खेलना चाह रहे हैं, क्विक अटैक्स करना चाह रहे हैं, विच इज़ इन माई ओपिनियन मुझे हमेशा ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। इट्स मोर एंटरटेनिंग टू वॉच। And as we talk about entertaining, there goes an attempt for a shoot, but it is deflected really well क्योंकि अब कॉर्नर मिलता है अब्दुल्ला को और कामाविंगा पास करते हैं शोमनी को, और सलीबा looking for an opportunity but is defended really well क्योंकि अब काउंटर आएगा उमर जान की तरफ से। काउंटर करने की कोशिश की लेकिन उनको बस वो रनर्स नहीं मिले इस दफ़ा, और उन्होंने थ्रू बॉल निकालने की कोशिश की, लेकिन हमने वही देखा जिस तरह हम स्टार्ट में बात कर रहे थे, इस दफ़ा ग्राउंड थ्रू बॉल्स इतनी एक्यूरेट नहीं है और आपको बहुत ही 100% उनको टाइम सही करना पड़ता है टू मेक समथिंग आउट ऑफ देम। और हम देख सकते हैं ये लोग मॉडर्न फुलबैक का रोल काफ़ी इफेक्टिवली यूटिलाइज कर रहे हैं। हमने देखा उमर जान को क्लाउश खिलाते हुए, और हम देख रहे हैं अब्दुल्ला को थियो हर्नांडिस खिलाते हुए। तो दो एलिमेंट्स ऑफ मॉडर्न फुटबॉल जो कि हम काफ़ी हद तक देखते आ रहे हैं रियल लाइफ स्पोर्ट में, वो फीफा में भी ट्रांसलेट करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि अब एम्बापे रन ढूंढते हुए गेट्स पोजेशन ऑफ द बॉल, पास की अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, कोमन मिलते हैं, कोमन गोज फॉर एन एडिशनल पास इंस्टेड ऑफ अ शूट एंड इट इज डिफेंडेड रियली वेल। I think Abdullah is just overthinking a little bit right now। वो हम दोनों हमने उनकी जो लास्ट टू अटेम्प्ट्स उनमें देखा है, वो एक्स्ट्रा पास करने की कोशिश की इंस्टेड ऑफ ट्रस्टिंग हिज प्लेयर्स एंड शूटिंग। और बिल्कुल थियो गोज इनटू द बॉक्स, passes it on to Kolo Muani, लेकिन उमर जान के लिए कुछ फ्रूइशन पे नहीं आ पा रहा because these players are playing purely on passing। And talk about passing, Diaby once does not go for a pass, goes for a shoot and it's saved by Mike Moynihan। और हम देख रहे हैं कि अब यहाँ पे अब्दुल्ला के पास एक अच्छा काउंटर अटैकिंग अपॉर्चुनिटी है। बात कर रहे थे फर्स्ट गेम के स्टार्ट में, वो इस तरह काउंटर अटैक्स के लिए मेनली यूज हो रहा है। एंड हियर्स अ वेरी गुड चांस फॉर एम्बापे बट इट इज सेव बाय सलीबा वंस अगेन। सलीबा जो है हम दोनों पहले मैच में भी देखा है, इस मैच में भी देखा है, ही हैज सीमेंटेड हिमसेल्फ एज द मेन सेंट्रल डिफेंडर। वो हर जगह आपको मतलब डिफेंस में नजर आ रहा है, सारे ब्लॉक्स इंटरसेप्शंस उसी से हो रहे हैं। ही इज द वन प्लेइंग अप फ्रॉम द बैक एंड last year say he has become pivotal for a lot of players। बिल्कुल, and talking about pivot, the X factor Mbappe tried to go for a run and dribble in towards the box, but it was intercepted really well। और आपने सलीबा की बात की माज, and I cannot get my eyes off Kamavinga। जो वर्क रेट उस प्लेयर का है, जो वो डिफेंसिवली कर रहा है और जो वो अटैकिंग में कर रहा है, वो हम नहीं यूजुअली देखते। और हम इधर देख सकते हैं कि अब एक फॉर्मेशन चेंज नजर आ रही है एज द गेम प्लान शिफ्ट्स टू अल्ट्रा डिफेंसिव, और कोलो मुआनी को स्ट्राइक की तरफ डाला हुआ है। और हम देख रहे हैं कि फीफा के जो प्लेयर्स हैं उनकी जनरल प्रेफरेंस पेस की तरफ जाती है। ऑल ऑफ द प्लेयर्स इन द फ्रेंच नेशनल टीम आर प्योर पेसर्स एंड प्योर स्किल मूव प्लेयर्स एंड इट शोज इन द गेम ऑफ प्लेयर्स एज वेल। या वही मतलब फीफा में तो हर साल आपको ज़रूरत होती है, रिगार्डलेस ऑफ द मेटा, पेस इज ऑलवेज देयर, और वो हमेशा अब्यूज मतलब हर साल होती रहती है। एंड दैट्स जस्ट द केस दिस ईयर एज वेल वंस अगेन। बिल्कुल, और इधर कुंडे लेफ्ट विंग तरफ डियाबी को देखते हुए, डियाबी ट्राइंग टू ड्रिबल द बॉल इनसाइड बट इट इज इंटरसेप्टेड वेल। और अब अब्दुल्ला की तरफ से काउंटर अटैक आएगा विद इन द 34th मिनट, और अभी तक कोई गोल नहीं हुआ। और गोल की बात करें तो एम्बापे इज लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी, बॉल रोल आता है एंड इट्स अ शूट and it is a goal scored by Omar Jan। और सलीबा जो कि डिफेंडर है was in the box as an X factor and he's able to score। और उमर जान with the lead, और ये हमने पिछली गेम में भी देखी थी लीड। क्या अब्दुल्ला के पास इसका जवाब है? जैसे वो बॉक्स के अंदर आते हैं और ग्रीजमैन शूट की जाते हैं, और उसी वक्त अब्दुल्ला काउंटर कर लेते हैं एंड इट्स अ 1-1 बैक टू नॉर्मल। और यहाँ पे उमर के लिए अच्छा चांस, लेकिन डिफेंडेड वेल बाय फामिकानो। और जैसे हम बात करें कि लास्ट गेम में भी यही हुआ था कि उमर ने फर्स्ट गोल किया था, लेकिन उसके बाद अब्दुल्ला ने रिस्पॉन्ड सेकंड हाफ में किया था। यहाँ पे तो डायरेक्टली इट वाज अ वेरी क्विक रिस्पॉन्स फ्रॉम अब्दुल्ला एंड ही मेड द गेम लेवल वंस अगेन। और किक ऑफ की यही बात होती है, हमने देखा जो इक्वलाइजर जो आए अभी, दैट केम डायरेक्टली फ्रॉम किक ऑफ।
किक ऑफ पे हमेशा हमने नोटिस किया है कि प्लेयर्स दे जस्ट aren't there for some reason. ये पता नहीं हर फीफा में होता है कि जब भी आप किक ऑफ करें डिफेंस आपकी इट्स नॉट वर्किंग एज वेल, और वही अभी अब्दुल्ला ने यूज़ करके उसको उसके अगेंस्ट अपना अटैक बनाया एंड ही गॉट द इक्वलाइजर इन पे। और अभी उमर जान अपना अटैक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एम्बापे विद द बॉल ट्राइंग टू ड्रिबल इट to find a pass as he finds Theo Hernandez on towards that left hand wing, looks for an opportunity but it is intercepted really well by the defensive back line of Umar Jan. Yeah, it's just been अभी काफ़ी बैलेंस गेम जा रहा है in my opinion। जैसे कि हमने देखा 43% लेफ्ट साइड पे खेला गया, 38% राइट पे, तो काफ़ी बैलेंस जा रहा है एंड इट इज़ फॉर द टेकिंग, लाइक कोई भी गेम ले जा सकता है। बिल्कुल, और इधर पेस का यूटिलाइजेशन करते हुए डेम्बेले राइट हैंड विंग की तरफ बिल्कुल खाली, लुक्स फॉर अ पास, फाइंड्स एन अपॉर्चुनिटी, एम्बापे स्कोर्स एंड इट्स अ गोल फॉर अब्दुल्ला, और वो सेलिब्रेट करते हैं बिकॉज़ इट्स 2-1। और उमर जान की तरफ प्रेशर, क्योंकि वो अपना सर पकड़ के बैठ गए हैं because this is the end of the first half of the second game. Abdullah's leading this game and Abdullah won last game, तो सारा प्रेशर अब आता है उमर जान की तरफ, और हम देखेंगे कि इधर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस होंगे दोनों प्लेयर्स की तरफ से, क्योंकि उमर जान की बेंच में अभी कोमन है, ग्रीजमैन है और कामाविंगा है अभी भी, एंड these three players can change the perspective of this game अगर उमर जान utilizes them well. Yeah, Omar Jan knows कि this is a must-win game for him now, क्योंकि अगर Abdullah wins this, he wins the best of 3 and he moves to the final. तो he will try everything in his power, वो अपने सारे subs करेंगे, अपने सारे जो हम देख रहे हैं instructions वगैरह players पे adjust कर रहे हैं, so that his players can play exactly the way he wants to. लेकिन अब देखते हैं if it works out for him this time, क्योंकि last time हमने देखा था he made those changes, लेकिन the risks did not pay off. Let's see how that goes. But there's a difference this time, क्योंकि इस बार उमर जान ने अल्ट्रा डिफेंसिव पे रखी हुई अपनी टीम. He's not bringing that back into that front इतना ज़्यादा. And you know what? That's another gamble because अभी तो गोल्स की ज़रूरत है. अभी एक क्रिटिकल गोल की ज़रूरत है, और वही अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए उमर जान अपने थियो हर्नांडेज को यूज़ करते हैं डियाबी के लिए, लेकिन माइनान is able to parry away the ball and now Abdullah has possession. Yeah, I feel like इस दफ़ा जो उमर जान ने चीज़ डिफरेंटली की है वो की है कि instead of moving his back line up, उसने बस players की instruction change की है, that he takes that risk, लेकिन वो इतना भी risky ना हो कि he ends up conceding more goals last night की तरह. बिल्कुल, because Abdullah read him like a book and he was able to capitalize really well in that game, and he's capitalizing on this through as Theo Hernandez has a ball and is trying to look for an opportunity. और अब अब्दुल्ला की तरफ एक फ्री किक है, he can go for a corner, he can go for a small pass. It is an opportunity nonetheless for Abdullah to cement his lead, make it 3-1 and go to the final of Dew Gamers Arena, and he goes for a shoot, but it is not good enough as Umar Jan now has to reset his caliber. काफ़ी decent free kick थी, it just ended up being off target and side netting पे hit हुई, but he went for that power shot free kick पे, लेकिन he just couldn't find the target this time. बिल्कुल, और अभी अब्दुल्ला बस possession रखते हुए trying to just mess around with Umar Jan, trying to pressurize him in any possible way because he's already won one game and he has to win this one to go to the final of the Dew Gamers Arena, as Umar Jan is trying to defend Abdullah and Koman is free into the box and a shoot comes in and another opportunity comes in, but Mainan is able to save it really well. और हम यही देखते जा रहे हैं, Abdullah is not stopping that attack. Abdullah constantly ammunition लेके आ रहे हैं and he's trying to go for those shoots and opportunities as much as he can. Yeah, Abdullah knows कि how good of a player Umar is, and अगर Abdullah ज़्यादा comfortable हो जाते हैं and stops trying, or he just tries to keep a hold of the ball too much, then Umar can get back into the game easily. That's why he's just trying to get that security by scoring another goal. बिल्कुल, और इधर एक और मौका मिलते हुए उमर जान को, who has to score one goal in the next 30 minutes. It's played away really well, लेकिन पोजीशन अभी भी उमर जान के पास है, जो कि सलीबा के थ्रू एक पास ढूंढते हैं on towards that left side. Theo Hernandez goes for a through ball to Griezmann, लेकिन Griezmann वो पास करते हुए intercept हो जाते हैं and the ball falls back into possession of Abdullah, जो कि अब मौके ढूंढेंगे कहीं पे भी, किसी भी मौके पे Griezmann मिलते हैं उनको, और Griezmann के साथ वो बॉक्स में जाते हैं and he goes for a shoot, but it is saved by Mainan, who's a great keeper in FC24.
अच्छा, मैंने नोटिस किया है सिर्फ कि अब्दुल्ला इतने कटबैक्स के लिए नहीं जा रहे हैं जितने यूजुअली प्लेयर्स जाते हैं। ही जब भी वो बाईलाइन पे पहुंचते हैं वो वापस ट्रिपल, ही ट्राइज टू ट्रिपल बैक इन एंड tries to finish with the same player instead of cutting it back. And और वो I ड्रिबल mean क्यों ना that is कर रहे playing हैं? back. Yeah, I mean he Why has the must players for it. So एग्जैक्टली and फ्रांस it's की what. टीम और एक और अपॉर्चुनिटी एज इट्स 3-1 फॉर अब्दुल्ला और उमर जान की तरफ से एक स्मर्क आती हुए बिकॉज ही right now is pushed up against the back of the ball and a trigger is ready with Abdullah and he will do whatever he can to make sure that Umar Jan does nothing of fruition ताकि वो finals में जा चुके हैं. जैसे कि हमने देखा ये गोल भी लॉब थ्रू बॉल के से आए हैं एंड दैट हैज बीन वेरी इफेक्टिव इस फीफा में. नॉर्मल थ्रू बॉल्स नर्फ की गई हैं लेकिन लॉब थ्रू बॉल्स आई फील इन माय ओपिनियन बेहतर की गई हैं. ये गोल भी ही इज जस्ट क्रिएटेड थ्रू दैट एंड अब्दुल्ला इज ऑन हिज वे टू द फाइनल्स नाउ. लग तो यही रहा है लेकिन क्या पता उमर जान के पास अपनी हैट में कुछ हो, any opportunity, anything that he can bring to the table, he will try to utilize as he's got only 20 minutes left to come to fruition and do something worthwhile as he passes it on towards Griezmann. लेकिन फिर से वही थ्रू बॉल्स की कहानी है FC24 की. They do not hit the same as they hit in FC FIFA 23. तो ये मतलब एक मजे का कंडम है क्योंकि वो हमने देखा है कि जो अर्ली गोल्स उमर जान की तरफ से आते हैं वो हमेशा आते हैं ओवर थ्रूज की निस्बत. लेकिन जब वो एक नॉर्मल थ्रू बॉल के थ्रू जाते हैं ही इज नॉट एबल टू स्कोर एनीथिंग एंड एज वी सी अब्दुल्ला ट्राइंग टू कट इनसाइड विद दियाबी, इट्स इंटरसेप्टेड रियली वेल. या और अब यहाँ पे अब्दुल्ला के पास बहुत अच्छा चांस फिर से आ जाता है एंड दैट इज अ गोल फ्रॉम एम्बापे. दैट वाज ग्रेट इन द बॉक्स ड्रिबलिंग बाय हिम एंड ही इज 4-1 up once again. 4-1, it was a scoreline last game, it's a scoreline this game, it's a hat trick for Mbappe, it's typical France, typical football, and Abdullah is the man with the wheel in his hand. Yeah, this game is Abdullah's to lose now, and I don't think he would lose up on a 3-goal lead now. लेकिन ये FIFA है, football है, कुछ नहीं पता होता इसमें. It's not over till it's over. बिल्कुल, और उमर जान भी यही सोच रहे होंगे as of right now, trying to go for an opportunity, trying to make any possible play as he has Coman trying to push on towards that right wing side, but Upamecano goes for a sliding tackle and shuts it down immediately. और अब्दुल्ला फिर से काउंटर के लिए जाते हुए लेकिन अब कुंडे उमर जान के intercept कर देते हैं and it's an end-to-end game with both the players going for consistent attacks. And speaking of another attack coming in from Abdullah, but the shoot from Mbappe is not worthwhile क्योंकि अब फिर से उमर जान के पास बॉल पोजीशन में आ रही है. Yeah, अब हम थोड़ा देख पा रहे हैं कि उमर is getting a bit impatient. वो बहुत जल्दी. Talk about impatience! What a goal from Griezmann! Abdullah is just flexing on Umar Jan right now. That was a beautiful attempt and a beautiful outside foot from Griezmann. और अब 5-1 हो गया और उमर जान के पास सिर्फ 6 मिनट हैं कुछ करने के लिए. That was a classic Griezmann goal. FIFA में हर साल Griezmann के finish shots बहुत अच्छे होते हैं. अभी भी हमने वही देखा. He just finished it from outside the box. बहुत प्यारा गोल हमें देखने को मिला अभी. और एक अटेम्प्ट उमर जान की तरफ से भी आती है आउटसाइड द फुट के लिए, but it's too far off wide as now it seems like David has become Goliath with just 4 minutes to go. It seems like Umar Jan has no answers to this question and he surely has failed the test. या उमर जान ने हमने देखा दोनों गेम्स में उनका वही था कि ही गॉट द फर्स्ट गोल लेकिन उसके बाद ही जस्ट कुड नॉट बिल्ड अप ऑन इट या वो डिफेंड भी नहीं कर पाया उसको सही से. अब्दुल्ला टेक्स हिज टाइम टू गेट इनटू द गेम लेकिन वंस ही गेट्स इनटू द गेम ही इज वेरी डेंजरस एज वी हैव सीन. बिल्कुल, और अब्दुल्ला एक और टैकली जाते हुए बट दिस टाइम उमर जान शट्स इट डाउन. And it's the 91st minute and it is the end as Abdullah goes to the finals of Dew Gamers Arena and Umar Jan has no answer to his questions. David has become Goliath and Abdullah has booked a ticket to Dew Gamers Arena's finals. Yeah, I mean, fair play to Umar. He played well. Lekin Abdullah was just too much for him to handle today. And अब्दुल्ला का हमने देखा वो बस थोड़ा सा अपना टाइम लेते हैं दोनों गेम्स में.
लेकिन एक दफ़ा वो फ्लो में आ गए वो, it's way too easy for him to score goals. Abdullah ki exploitation through and through in these games was completely different to that of Umar. उसकी outlook ही completely different थी to the game और उसका जो attempts थे मतलब the way he utilized Kamavinga throughout this game was utilized way better than what I've seen in FC24 up till now. उसकी utilization जो wings की तरफ आ रही थी वो भी बहुत अच्छी थी. Never looking for those cheap cutbacks, always trying to dribble in towards that box, trying to find an opportunity. उमर जान in my opinion थोड़ा सा अनलकी भी रहे हैं क्योंकि उनको जो मौके मिल रहे थे या जो opportunities मिल रही थी they were either saved really well or they were shot off wide. और कभी बार ये जो element of luck आता है FC24 के अंदर या किसी भी आप EA Sports की फुटबॉल टाइटल को देख लो तो it's a consistent thing that has existed in the game for a while. Yeah, अब्दुल्ला का जो वो था प्ले स्टाइल था जिस तरह आपने कहा कि वो कटबैक्स के लिए नहीं जा रहे थे ड्रिबलिंग. दैट कम्स डाउन टू टू थिंग्स, ट्रस्टिंग योरसेल्फ, ट्रस्टिंग योर ओन स्किल्स एंड एज वेल एज द प्लेयर्स यू आर यूजिंग. तो अब्दुल्ला ने वही किया एंड इट पेड ऑफ रियली वेल फॉर हिम एंड कंग्रेचुलेशंस टू हिम फॉर गेटिंग टू द फाइनल्स नाउ. बिल्कुल. एंड इट्स इंटरेस्टिंग जिस तरह फीफा काम करती है. हर साल एक नई गेम आती है, हर साल एक नया मेटा डिक्लेयर होता है फीफा का और वो ही है कि who adapted to the meta better, and it seems like in the first few months of the game Abdullah has had his wheel and his car ready and he's having a head start over most of the players. Yeah, start of the FIFA में यही होता है, who is the fastest to adapt to it और with time हो जाता है who adapts the best to it. अभी तो वो चल रहा है कौन सबसे पहले अडाप्ट करता है मेटा को, कौन सबसे सही समझता है, and Abdullah seems to be the one who's gotten a hold of it better than Omar. बिल्कुल. and now I think we're going to go for a short break और उस ब्रेक के बाद हम क्वालिफायर्स के राउंड 2 लेकर आएंगे which will be Ebrahim versus Ezan, Rehman. Stay tuned.
माउंटेन ड्यू, यार हैं तो पार हैं। गाइस मेरी लूजिंग स्ट्रीक तो खत्म कराओ। हम आ गए हैं जीतने के लिए। चलो चलो खेल खेल ऑन योर लेफ्ट ऑन योर लेफ्ट वही करना। गेमर होना इतना आसान नहीं है ब्रो। जब ओपोनेंट्स और ये सोसाइटी हो चैलेंज करने को तैयार, खेल नहीं सकते तो ब्रिंग इट ऑन कहकर खुद को अनलीश करना पड़ता है। सब एनिमीज को एक साथ नॉकआउट करना पड़ता है। जिसमें दम हो खुद को अनलीश करने का, वो हर चैलेंज को कॉन्कर करता है। जो सेट करते हैं अपने पैशन की टोन, वो खुद को अनलीश करके कहते हैं ब्रिंग इट ऑन। तो फिर अब जीत ऑन रिपीट का नारा लगेगा, क्योंकि गेम बर्ड पर सिर्फ ई गेमिंग का डंका बजेगा। ये पैशन की टोन यहाँ ई टूर्नामेंट्स और स्ट्रीमिंग का है सीन ऑन। सो विद गेम बर्ड, ब्रिंग इट ऑन। Welcome back to Dew Gamers Arena. मेरा नाम राजा है and we are about to get ready for qualifier number 2 of FC24, and I'm here with we've had a crazy set of games up till now, and we just had the Abdullah and Omar Shaukat match, and you was able to and if we take a look at the brackets, the next match we have is Ezan Rehman versus Ebrahim. Our first match was excellent. It was great watching it was great watching Abdullah play the way he played and the way he came back in both of those matches and went on to win the game. Now I'm expecting a similar matchup, similar entertainment in in the second semi-final. This Ezan and Ebrahim match is going to be an interesting one for the books, because again, this has a series of matches that have been played out through and qualifier number 2, and we have an opportunity over here for the players to do something and for the players to, an interesting bout. And we are about to get underway with the, as both the players have chosen France as their team of choice. Hello everyone, delighted to be I'm expecting it to be once again. Where we can see that it's the same story once again. We see that France is able to be a very cumulative team, and France as a selection of a choice in FC24 makes complete and total sense, because again, they're pacey players and they're players that have a lot of skill moves and they're players that have a lot of good shooting stats. So it makes complete sense for the players to choose that as their meta, as we see them trying to make plays on towards that side, and there's already a pause executed, and so that they can change their tactics and change their players. And as we see now, the teams will be changing their players and whatever tactics they may have. And we've seen Saliba before, and we're seeing Saliba again as a priority pick between both these teams. And along with Saliba, yesterday we were talking about last match we were talking about how the introduction of Kamavinga as a pick was a very important one. His work rate in that defense and that attack is really peculiar and really different to other players. So it makes total and complete sense for Ezan and Ebrahim both to as their choice of players. And of course, if we take a look at their prior history, then we know for a fact that Ezan is someone who's had pretty or both these players have had 0 clean sheets through and through, and that has remained consistent for both of them, as Ebrahim came from a 7-4 to a 4-2 to a 2-1 to now be playing in the finals. Ezan came from
from 4-2 to a 2-1 to a Well, you get the feeling so 6-5. many in attendance here have come just to see One thing we could see both players do early on is the change, checking the team management to see. So yeah, I mean, this is an interesting bout because both these players are playing a very possession-based game over here, and we can see that Ezan, the white kid, is trying to look for, and the blue kid, sorry, is trying to look for any opportunity that he can, as Ebrahim is trying to make any attack possible as he goes for an upward through ball there, trying to find any chance of opportunity, but it is lackluster as Ezan is able to defend it really well, and now to go for a counter attack, trying to find any window of chance or window of opportunity that can assist him in any way, shape, or form. William Saliba. Yeah, as we have seen that it's been a good balanced start between the two teams, and so we can see that one there's an thing attack over here coming on towards from Ebrahim, but Ezan is able to fend off really well as he's trying to make any chance for himself count. As he has the possession of the ball left hand wing side, trying to find any window of opportunity, but it is defended really well by Ebrahim, who's now on his part, on his hand, just trying to look for any opportunities whatsoever. Again, they're all playing Dembele, they're all playing Hernandez because of that 5-star skill group, that pace. They've got Klaus on left back, who was a shout last year, not someone who has found any, cards as of last year, because last year the team of the season card that were released, Klaus was a very common pick and a very common win as well. As again we see another attack being built on towards that side, but there is nothing that comes to fruition as Ebrahim is now looking for any attack from his side that he may be able to. Ebrahim now playing on towards that left hand wing, just trying to look for any passes as he finds Mbappe and tries to go for a shoot, but it's saved really well by Mainan and Ezan, who now tries to build a play on the side through himself. Yeah, it's a start, and both teams have been trying to get that first goal in, trying different ways to get that first goal in, but it's been an entertaining start regardless. Oh, nice ball. And now, as we can see, that lob through ball once again to try and find that space behind, but this time he refuses to succeed. And this time, the referee knew it's just that was foul play, but advantage he's just trying to slowly build out from the back. Once again, both teams using France, one of the most meta teams. This and Man City are meta teams this year, as we all know. Man City I'm a bit surprised about, because usually it's all about agile 5-star players, and Man City has a lack of that. But on the other hand, France every single year it's one of the best teams, and every single player does use that, especially at the start of the year. Yeah, I mean, it's just France, right? France has that pace, that skill set, general consensus of players, and we all know that FIFA players really like playing with pacey players. तो मतलब it's a general selection जो कि हम काफ़ी अरसे से देखते आ रहे हैं, और जिस तरह गेम का मेटा चेंज होते जा रहा है उस तरह प्लेयर्स की प्रेफरेंस जो है वो with pacey players and skill move based players. No one really wants to go for the lengthy option जो कि EA ने 23 में और FC24 में there were additions, और फिर से ईजान की तरफ से एक विंग पे, लेकिन वहाँ पर वो पास नहीं ढूंढ पाते क्योंकि वहाँ पर उनको And here we could see a good chance for Ezan. He almost took advantage of it, or बहुत करीब आ गए थे, but he just could not finish his chance and get the shot on target. And that was a beautiful chance. I would say that was his best chance so far. बिल्कुल, और अभी हम इब्राहिम की तरफ से एक अटैक देख रहे हैं जहाँ पे मतलब वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली पहला हाफ खत्म हो गया. इट्स अ वेरी इक्वल बैटल. मतलब इधर कहीं पे मुझे ये नहीं नजर आया कि एक जो प्लेयर हो वो दूसरे को डोमिनेट कर रहा हो. इट्स अ वेरी इक्वल सेट ऑफ गेम्स गोइंग ऑन ओवर हियर राइट नाउ, और यहाँ पे अब ऑब्वियसली हाफ टाइम खत्म हो गया है, और तो दोनों प्लेयर्स कोशिश करेंगे कि अपनी किसी तरह से अपनी टीम्स को they can change and adapt their teams as to how the player is playing, but they decide not to go for a change. तो मतलब यही है कि दोनों प्लेयर्स को अपने सेटअप है, अपनी टैक्टिक्स पे बार है, and they want to keep going forward with that. Yeah, changes at halftime, in my opinion, is necessary
especially जब आपको अपने opponent का idea हो जाए, तो we could just see both of them doing that, adjusting their tactics and instructions वगैरह ताकि वो accordingly खेल पाएं and they can exploit their opponent's weaknesses. These players play at a professional level, इनको अच्छे से पता है कि इनको क्या tweak करना है at what time, and वो use करते हैं, and they make sure to use their pauses and their time at halftime to make those changes effectively. And the flag is बिल्कुल, और अभी हम देख सकते हैं कि offside. इब्राहिम अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रहे थे लेकिन in an ऑफसाइड offside position. के लिए चालू हो गया, तो अब वापस बॉल पोजीशन Only आती है took a इंसान के touch पास, on the तो way out इंसान of भी अपनी play, तरफ से so a भी throw in मौका to ढूंढ रहे come. होंगे बिल्कुल कि वो किसी Theo तरह से भी प्ले बना Hernandez. सकें जो कि उनको एक गोल दे सके, लेकिन इट्स एन इक्वल फुटिंग, मतलब दे आर नॉट चैलेंजिंग ईच अदर्स बॉक्सेस बट दे आर Koundé. नॉट Plenty of चैलेंजिंग देयर forward बॉक्सेस momentum आइदर. here, but can they दोनों produce? टीम्स के जो प्लेयर्स हैं, दे आर ट्राइंग देयर The हार्डेस्ट deflection टू behind फाइंड then for एनी the corner. to shut down really well by each other. But he's gone short with it. Yeah, Well, they're दोनों going to be players जो very हैं वो cross एक with दूसरे को themselves ज़रा because क्लोज that was बहुत a जल्दी wasted कर रहे हैं, not opportunity. giving any chance to each other. थोड़ा I would even say compared to the first semi-final we watched, ये दोनों ज़्यादा careful रह रहे Griezmann. हैं, लेकिन at Room the to same run time here their for attacking France. play is very good, and I think it's been Mbappe! entertaining and a very balanced half so Oh, far. he's blocked it. बिल्कुल, और अभी ईज़ान की तरफ से एक अटैक आते हुए था लेकिन इब्राहिम ने फिर Brilliant से piece of skill. डिफेंड कर दिया. तो हमने पिछली गेम में भी बात की थी मास के कितना क्रूशियल है सलीबा इस And cutting it फीफा के out. वर्जन में, जहाँ पर मतलब उसकी टांगें और उसकी जो एजिलिटी है, डिफेंसिव एबिलिटी जो सलीबा की है, वो And so 30 बहुत minutes डिफरेंट है left for play in this कंपेयर टू one. अदर डिफेंडर्स. हाँ, सलीबा is just on a different level now. वो हर बंदे के पास होने चाहिए अपनी टीम में. Diaby I'd even say like defense में he just cutting off the arguably supply. could be the best centre back in this FIFA, especially at the start of the year. जब Koundé. इतने आपके पास, अगर आप ना खेल रहे हो तो आपके पास इतने options नहीं होते, तो Saliba It's with is a Kingsley must-have in Coman. anyone's team. या टीम में starter teams वगैरह में you need to have him in your team. Yeah, and we're at the 6th Theo minute game और Hernandez. अभी तक दोनों प्लेयर्स की तरफ से कोई ब्रेक थ्रू नहीं नजर आया. They've been at each other's throats for the past 64 minutes और मतलब Mike किसी Maignan. प्लेयर की तरफ से सॉलिड गोल नहीं आया. There have been shots, there have been Jules chances Koundé on the ball. missed, there have been passes misled, लेकिन कहीं से From one कोई side मौका of the नहीं pitch मिला to इन the दोनों other. प्लेयर्स को कि वो एक से आगे जा सकें. It's been a match on equal footing as again Ebrahim tries to look for a through, but Ezan intercepts it, trying to play on towards that wing, Promising but pass. Ezan is able to well, as he goes for another through and he's trying to time look to for a play it pass, over. finds a pass, tries to go for another, Still passing but it around he with has to authority. track back क्योंकि उधर इब्राहिम के सारे players पीछे track back. Ibrahim is not Hussain willing to take that risk. He does not want to play the Theo game on Hernandez counter now. और यही हमें Diaby. नजर आता आ रहा है पिछले 70 मिनट. Interception to snuff out the danger. Yeah, Ebrahim is just now he does not want to Good take weight on any that risks. pass. He knows what's at stake. वो risk नहीं ले Coman. सकता. He can't lose the first game. First game सबसे Options in the important होता है, centre. so you can get into your opponent's head. Will this वो थोड़ा corner mental bear pressure आना fruit शुरू for हो them? जाता है no matter how resilient you are. And taken short. And Ibrahim just And the doesn't cross from want that to happen. Mbappe. That we would go for now. And there Counter it Ebrahim is. here. And The here's a victory great is chance for broken. him, and he ends up Wonderful scoring from goal, will Coman. arrive. That was a Well, now goal. it has. Sorry, And will too there many. be a response That was a great now? chance, and he's Theo hit the Hernandez. piece. Jules Bilkul, Koundé and it on the seems ball. like the parry has been broken and a breakthrough has Deflection been play now. made in the 78th minute. तो अब क्या ईज़ान के पास Shaukat इसके लिए कोई जवाब है? Can he find William something? Because Saliba. Ibrahim and his anti-counter attacking 10 strategy minutes to has go. worked out हम जैसे देख रहे हैं यहाँ पे perfectly. play build up. Oh, nice ball over the top. Well, he wasn't messing around with the clearance. और अभी फिर से to इब्राहिम win की the तरफ ball बॉल back. है and he's trying to find another opportunity. 83rd minute of the game. क्या ईज़ान कोई जवाब है इब्राहिम William के लिए? Saliba. Because he is running away with the first Well, there's game still scope of for the late drama semi-final here. 5 minutes for left. And the just one finals goal of View between the Gamers Arena. sides. लेकिन उनके पास फिलहाल On the सिर्फ attack और in the सिर्फ closing phase. कोई जवाब नहीं है. Can he play it in? Yeah, he's taken the lead in the first game. He's taken the first step. अब इसको बस यही करना है कि आप थोड़ी lead Griezmann. defend करके रखनी है Firing it इब्राहिम towards को. goal. लेकिन that won't Well, be the easy keeper because kept as we it have out seen, with a Ezan minimum has been of playing fuss, great. but He it just wasn't a great cannot effort. finish his chances. Apart from that, his play has been very good. Lekin all credit to Ibrahim's defending as well. He's defended really well William throughout. Saliba. Used
the counter attacking to his advantage. और पहला गोल हमने देखा उसी से उनको कॉर्नर मिला Well, उसी से just उन्होंने 1 गोल minute मारा of फिर time added on for stoppages here. बिल्कुल और अभी Ibrahim just trying to find any pass whatsoever Great to vision go to for another switch the goal, trying to play. waste time as we're in the 91st minute, and it seems like that And it's that going will be home. that. It's The going for end of this Ibrahim. game The and a first French game defeat. is won by Ibrahim in the 80th minute, and this has been an interesting game to say the least. Neck to neck था into end था और इब्राहिम ने किसी तरह से एक मौका ढूंढा और उसका फायदा उठाया and he was able to do something, well out of it. या इस गेम में हमने ये चीज़ इन कॉन्ट्रास्ट टू द फर्स्ट सेमीफाइनल ये देखी कि फर्स्ट गेम में हमने देखा था कि काफ़ी ज़्यादा गोल स्कोर हुए थे 5 इन द फर्स्ट मैच 6 इन द सेकंड ये गेम वेरी टाइट 1-0 गेम दोनों प्लेयर्स थोड़ा ज़्यादा केयरफुल रहे इसमें डिफेंसिवली बट इट वाज रिगार्डलेस बिल्कुल और अब बॉल आ गई है ईजान के में क्योंकि इब्राहिम के पास एक मैच की लीड है इट्स अ बेस्ट ऑफ 3 देयर स्टिल अ चांस फॉर हिम टू विन तो ये गेम उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी कि वो किसी तरह से इसको जीतें so that he takes it to game number 3 where the score will be settled and it will be decided who the grand finalist facing Abdullah will be in Dew Gamers Arena. Yeah, this game could be a decider. Okay, now moving on to the second game. Let's see how that plays out between the two. First game was very entertaining, very tight. Now we'll see if they can be a comeback this match. बिल्कुल और वही बात है जो मेटा है दे आर नॉट शिफ्टिंग फ्रॉम दैट 4-4-2 फ्लैट हमने पिछली गेम में भी देखा क्या यूज हो रहा था हम इस गेम में भी देख रहे हैं यूज हो रहा था फ्रांस की प्रेफरेंस पिछले गेम और इस गेम दोनों गेम्स में यूटिलाइज हुई है तो दिस एट द एंड ऑफ द डे इज द मेटा एंड इट इज बीइंग फॉलोड ड्यूली बाय द प्लेयर्स एज इब्राहिम हैज द पोजीशन ऑफ द बॉल टू स्टार्ट द गेम And the general feeling is we should be in for a spellbinding occasion. It's France versus France. Well, it was all square in their last match, and I think it was. और इब्राहिम इधर अपनी तरफ से क्या कहते हैं कोशिश करें लेकिन इजान ने उसको इंटरसेप्ट काफी अच्छे तरीके से कर लिया एंड ट्राइज टू गो फॉर अ थ्रू और इजान एम्बापे को राइट विंग पे खिला रहे हैं इंस्टेड ऑफ स्ट्राइक दैट इज अ डिफरेंट यूटिलाइजेशन ऑफ वन ऑफ द बेस्ट कार्ड्स इन फीफा और अभी विंग की तरफ से कोई प्ले बनाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन किसी मौका नहीं मिल रहा किसी पास नहीं मिल रहा फाइंड्स अ पर्सन बट गोज एंड ट्रैक्स बैक इन मौकों पे मैंने देखा कि ईजान अपनी गेम को प्रेफर कर किसी तरह से मौके निकालें विंग पे एंड ही falters away really easily and I think that is exactly what is holding Ezan back just that that ability to be scared to power on towards the box trying to go for the cross और हमने अभी भी देखा पिछले मैच में crosses बहुत crucial हैं तो अब हम देख रहे हैं इब्राहिम जो कि एक अटैक बनाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन he is stopped there really well by Ezan again will try to make an attack and try to go for an opportunity try to create chances and runs जहाँ पे इनके लिए Griezmann run बनाते हैं and he tries to pass it but he tracks back and again Ebrahim is able to fend him off really well ईजान को अब तक एहसास हो जाना चाहिए कि इब्राहिम की जो गेम प्ले है वो उनकी सारी टीम की ट्रैक बैक एबिलिटी पे है as soon as Ezan brings the ball to the opposite team's half Ebrahim and his team tracks back and that is exactly what Ezan should know because ये ऐसी crucial details होती हैं जो बिल्कुल गेम की क्या कहते हैं पर्सपेक्टिव बदल सकती हैं Yeah, crossing in this FIFA as far as we've seen कि इसमें काफ़ी बेहतर की गई है काफ़ी ज़्यादा accurate हो गई है अब it's a very dangerous tool to use a lot of players throughout the years have not utilized it as much वो cutbacks या playing through the wicket rely कर रहे थे but if you can add that to your game if you can use more of that you can get a hold of your opponent very easily this year बिल्कुल और अभी हम इब्राहिम की तरफ से देख रहे हैं कि वो अटैक बनाने की कोशिश कर रहे हैं एंड ट्राइंग टू विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी पिछली गेम पे हमने कटबैक्स और ट्रिपल्स काफी देखे इस गेम में हम कम देख रहे हैं लेकिन इब्राहिम के पास एक अपॉर्चुनिटी थी बट ही इज नॉट एबल टू डिफेंड इट रियली वेल एज एम्बापे गोस फॉर एन आउटसाइड द फुट शॉट बट इट इज डिफेंडेड वेल बाय द कीपर एंड दैट prompts a pause जहाँ पे ये अब अपनी tactics देखेंगे and they'll try to think to change their tactics. Yeah, he's quickly changing his team's width. उनको नहीं पसंद आ रही कि how his team's playing out उसकी width वगैरह. He might be trying to actually use full length of the pitch to his advantage, using those wingers, those quick pacey wingers, Dembele, Coman वगैरह, ताकि वो उस तरह उनको use करके he can get to the opponent's half quickly, box की तरफ पहुँच के maybe cross the ball in. And he can get the first goal at this match.
डेम्बेले और कोमन की बात तो कर ली, लेकिन एक और प्लेयर है जो कि हम इस फीफा में बहुत ज़्यादा यूटिलाइज होते हुए देख रहे हैं, वो है डियाबी, जिनको हम बहुत यूज होते हुए देखे। जैसे इब्राहिम अब एक और आउटसाइड द फुट क्रॉस के लिए जाते हैं, लेकिन ईजान इज एबल टू फिनिश इट ऑफ रियली वेल एज हिज एम्बापे ट्राइज टू लुक फॉर अ काउंटर अटैक, बट ईजान जो उनकी ट्रैक बैक एबिलिटी है, it doesn't matter because he's gone for a beautiful through ball, but Ebrahim and his players, they track back so quickly that Ezan really has no answer for them as the ball falls out of bounds for a corner. Yeah, that was a very good opportunity because he tried to play a quick counter attack. Ibrahim ki jo players and he set the instructions, I'm guessing, to come back on defense. They came back to France में वैसे भी there's very pacey players, so they were back in no time. And now he has a chance to do a counter attack himself. The ball saved by the keeper. इब्राहिम के पास जो अपॉर्चुनिटी थी वो अंडर यूटिलाइज होती है, और अब ईजान फिर से काउंटर अटैक की कोशिश कर रहे हैं, ट्राइंग टू लुक फॉर अ पास एज ही फाइंड्स डियाबी एंड डियाबी फाइंड्स एम्बापे, एन अपॉर्चुनिटी फॉर ईजान टू डू समथिंग, गोस फॉर अ शूट but it is far off wide, or Ezan again the pressure is with him, the young one, trying to look for any sort of opportunity, trying to look for any shoot, any pass, but he's unable to find anything, and he tracks back once again. Yeah. And players waiting in the centre. I feel like a goal is coming soon because we've seen him get 2 corners. There's another great chance for him. He passes the ball on and he scores. He's 1-0. Ebrahim. Well done. बिल्कुल, और अभी ईजान ने अपने लिए एक गोल स्कोर कर लिया है, which means he's back in the bout. By the end of this game, अगर स्कोर 1-0 ही रहता है तो फिर बेस्ट ऑफ 3 का स्कोर 1-1 हो जाएगा, which will prompt a third game to decide who goes to the final of Dew Gamers Arena as Ezan leads. Will Ebrahim have an answer to this equation, or will Ezan cement this and take him to game number 3 as he goes for another? Tries to go for a pass, is successful in going for the pass, but is unable to shoot the ball properly as the ball falls back to Ibrahim's possession. Yeah, Ezan has been playing very good. First match में वो थोड़ा unlucky अपनी finishing की वजह से हो गए थे. इस मैच पे भी हमने देखा कि शुरू में his finishing letting him down, but now the way he's playing has been beautiful and he's been creating a lot of chances for himself. He knows this is a must-win game for him and he's trying his best to do just that. और हमने यही देखा कि ईजान की इस बार जो गोल आया, it was not because he tracked back, it was because he committed, and I think that is exactly what is required from Ezan and his end, to commit and go for any window of opportunity that he can find. But फिलहाल उसकी डिफेंडिंग अब मैटर करती है, क्योंकि इब्राहिम अपनी तरफ से कटा है. Another opportunity from the corner for France to get right back into this game. अटैक की बात की जाए तो एक अच्छा मौका था इब्राहिम के पास, जो कि अब कॉर्नर यूटिलाइज करते हैं, but he is unable to score anything. Yeah, Ebrahim scored this. It was a great chance again. Once again, the defending France के defenders, I feel like just in general, like excluding Saliba as well, they're just that good. They're that pacey. कि आप उनको आराम से move कर सकते हो, get them into position quickly, and we've seen that the game is like close are ready to the players as well. They've been defending fantastically throughout. बिल्कुल, and now Ezan will try to look for any opportunity to make it a double as Ebrahim brings Mainan forward. और एक बड़ा risky game था because Ebrahim हमने देखा कि काफी high backline नहीं खेलते हैं, to go for conventional methodologies. खिला तो वो 4-4-2 रहे हैं, but portray वो 4-3-3 कर रहे हैं, क्योंकि अब वो attack के लिए जा रहे हैं, and he's trying to look for a pass anywhere, but the ball is bounced. The first half has come to an end here at the Orange. Yeah, he just tried to get to the byline quickly. And that brings us to the end of the first half. Entertaining half. Is half and score quickly, and now he just needs to see the game out. या फिर 1-2 और goal score थोड़ा ताकि उनको comfortable lead मिल जाए. He just needs to try and do that. बिल्कुल, और अगर हम ईजान की हिस्ट्री देखें तो उनकी जो पिछली गेम थी वो थी 6-5. So he's someone who's not, short of goals. He knows how to score those goals. It's just a matter of how comfortable he can get, to score those goals. और
इब्राहिम Well, भी it's यही सोच रहे advantage होंगे क्योंकि France वो after भी the एक first 7-4, एक 45. 4-2 और एक Plenty of 2-1 time for a few जैसे स्कोर twists लाइन से and आगे turns आए हैं, तो before he this one is also has over. the ability to go for those goals. I realize that their defensive backlines and their defensive demeanors are not as strong as that And of other nicely over players the in the top. Pakistani A scene, bit as wasteful we from see France. now that Ibrahim back the possession of the ball, trying to find empty players to create an opportunity, create a game Upamecano. for himself. Jules Koundé on the ball. Yeah, Ibrahim का जो Upamecano. game sit back at the ball and then counter attack. First game में तो Dembele काफी on the अच्छे ball. से वो चल गया था, लेकिन I feel like Ezan has read William him well. Saliba. उनको भी थोड़ा समझ आना शुरू हो गया कि how Well, Ibrahim's trying to Antoine play that out, Griezmann, so far, you've and got to he's say, countered that excelling out there, effectively so far. Stuart. Well, Derek, he took his goal well बिल्कुल और and was अभी a constant possession threat throughout ईजान के that पास first आते half. हुए I thought he who showed a will now lot of try to skill to get out of go tight for a situations, second goal and he had ताकि a वो real lead impact अपनी on the maintain play. कर सकें. Well, an Because with opportunity football, for you France, never know perhaps, to कि make कब it क्या look हो even रहा है. better. Even at the 90th minute हमने असली में भी देखा और हम FIFA में भी देखते आ रहे हैं. Mbappe. 90th minute में भी games equalize होती हैं, opportunities create हो रही होती हैं. तो it's a thing of Well, they can wonder. really get at the opposition, ईजान अपने attack but the danger averted या for आपको now. 90th मिनट तक जब तक फाइनल बिल्कुल फ्लो नहीं हो जाए, कुछ नहीं पता होता कि कभी भी कुछ भी हो जाए. तो I'd say Ibrahim is still well in the game. He just needs to get that one chance. एक गोल उसको बस मिल जाए, that's all he needs. Equalize हो जाएगा game and then it's for the taking. बिल्कुल. और अगर इब्राहिम who's in the 57th minute of the Throw in here game for France. and he's still scoreless and Ezan is leading and हमें ये भी पता है कि best of 3 में एक advantage इब्राहिम के पास है and Ezan is just trying to recover and he's trying to take it to game 3 and he's up till now he's successful क्योंकि वो 1-0 का जो deficit है वो उनके favor में है. The inside route looks promising. Yeah, वो He's got मतलब acres of काफी space. uh, And a goal to increase their advantage. It's a two-goal lead now. Beautiful goal. Absolutely beautiful goal as Ezan now makes it 2-0. Koundé. तो हालात तो यही लग रहे हैं कि गेम 3 पे जाएगी ये क्योंकि हमने पिछले मैच में we ended it at 2-0 instead of taking it to game number 3, Mbappe with whereas it. now Ezan has been able to recover really well as he makes it 2-0. Does Dembele. Ebrahim have an Rabiot. answer to this equation? He's still got the time, he's got the players, he's making Now an attack, Mbappe. and he'll look for a pass on towards that box, The attack tries to carrying promise, make an but opportunity gives it out. happen, but it is defended really well by Ezan और वापस स्क्वायर वन पे आ जाते हैं इब्राहिम जो कि अपने अटैक को और अपने अटैक से कोई फायदा नहीं उठा पा. Griezmann. Yeah, अभी तक This तो opportunity काफी को- अच्छा चांस उनको मिल रहा है. Ezan has done really well कि उनको एक और गोल मिल गया. अब he's got that sense of, you could say, comfortability. And here's अब Saliba. वो आराम से सीख सकते हैं. Just trust his defense, just trust his game, play his natural Dembele. game. While Ibrahim, उनके पास अभी भी Now, काफी अच्छा Rabiot. चांस है. उनको बस एक गोल की जरूरत है for now. बिल्कुल, Dembele. one goal is what it takes to secure your momentum back, and we see Ibrahim trying to make an attack. Does he go for a pass or a shoot? He goes for a pass, executes it, tries to look for an opportunity, but it's intercepted by the keeper, who now gives the ball back, and that's a risky pass keeper की तरफ से, 20 but minutes it is remaining now. fared off well. Camavinga. And very nicely और अभी हम positioned देख to रहे हैं win कि it एक पॉज back. वैसे ही सिक्योर है और 72nd मिनट पे Griezmann. गेम आ गई है and Ezan is comfortably leading this game Griezmann whereas with Ibrahim is it. trying to look for any opportunity Well, it that he turns can out to to be score a fairly goal routine for the keeper and in it the is end. saved by Mike Minan, the keeper of choice for both Mbappe. the players. और अभी Ezan फिर से एक Dembele on the अटैक ball. बनाते हुए he's got his France confidence pushing back, he's forward got with his options comfort available. back. Now what he can do is try to look for any opportunity as now the pause is scheduled and tactics might be changed. हम देखी जा रहे हैं कि मतलब जिसको रिकवरी करते हुए मसला आ रहा था अब उनकी ट्रैक बैक एबिलिटी भी कम होगी एंड his confidence of scoring goals has also been recovered. अब वो काफ़ी ज़्यादा कोशिश वो मौकों का फ़ायदा उठा पाएँ और पासेस का फ़ायदा उठा पाएँ एंड उसको हम नज़र आ रहा है कि उसका फ़ायदा ही हो रहा है. As right now he's got a 2-0 lead and if he can persist with this lead तो हम गेम तक जाएंगे और जहाँ तक हम इब्राहिम की बात करें, he's got a problem right Well, couldn't now. find a He teammate, has the unfortunately. opportunity And to a throw in finish to and go come. to the finals right now if he can score 3 goals, Close. but he has no answer for the magic of Ezan.
और ये फिर से देख रहे हैं ईजान की तरफ से अटैक बनाने की कोशिश कर रहे हैं पूरी तरह से, लेकिन इब्राहिम भी चाहते हैं कि वो अटैक बनाए, and he's trying to go from that left hand wing side, trying to find sort of chance or any sort of opportunity as he looks for a through, but it is intercepted well by Ezan, जो अपनी तरफ से अटैक ढूंढेंगे, and he goes for an upper through ball as now Ebrahim intercepts it, and it's back to square one for both the boys as Ezan leads it to 2-0 on the 80th minute of the second game of Dew Gamers Arena qualifiers. और Ezan फिर से मतलब he's just trying to find passes, he's trying to find opportunities जैसे होता है, and he finds an opportunity but it is intercepted well as it is called off for offside. Ebrahim वापस से, you still got 8 minutes, you've got 8 minutes, you can do a lot of things in those 8 minutes, you can score 2 goals in those 8 minutes, take it to extra time. फिलहाल लग नहीं रहा कि वो ऐसे कुछ कर पाएगा as Ebrahim holds possession in the ball. And options in the centre. They've won back possession. Ezan now trying to make a play on his side. वही बात है, why not go for a third one as he's got Mbappe trying to take possession of the ball, but Koundé is there to intercept it really well. Ball pass की कर दी जाती है. Kolo Muani. France France giving away possession. A good vision there. वो बस किसी तरह And cuts inside. counter attack कर रही, he needs to switch his thing up a bit, थोड़ा वो possession को hold रखें, थोड़ा comfortably खेलें, and maybe that could work out for him क्योंकि अभी we could see it's too late to go for a switch now as we're in the 90th minute as Ebrahim is trying to find an opportunity, but it's 2-0 already, and it might be the end as we're ready to go to a game 3 as the match ends, and we will have a game 3 of qualifier number 2 for Dew Gamers Arena, where Ezan facing Ebrahim for a spot in the finals for Dew Gamers Arena. Yeah, both games हमने देखा different outcome और अब हमें game 3 को देखने को मिल रहा है, which means more entertainment for us, more enjoyment for us again. At the same time, both players they played. But yeah, that is but both players have played very well in both games. दोनों का जिस तरह play style है हमें evidently पता चल रहा है. You could see that Ezan ने थोड़ा figure out कर लिया था Ebrahim को, तो Ebrahim might need to switch it up a bit in the third match. Again, I think that'll be a very entertaining match as well. बिल्कुल, इब्राहिम ने अपना गेम स्टाइल बिल्कुल ही चेंज कर दिया था. He was tracking back his defenders, yes, but Ezan read it really well. And you know, speaking of this game, let's move on to game number 3, game that will decide who faces Abdullah in the final of FC24 Dew Gamers Arena. Yeah, we could see teams वो दोनों same ही रख रहे हैं. Just that standard France team, Meta team, TRP with this on the left, Dembele on the right, and Griezmann. I have not seen much in previous FIFAs as a striker, लेकिन इस FIFA में the way this game really favorable to the player. बिल्कुल, और अभी हमने देखा काफा विंगर पिछले मैचअप में देखी थी क्वालिफायर 1 के फाइनल में, और इस मैचअप में हम देखें इट इज वेरी कॉन्ट्रास्टिंग कंपेयर्ड टू बिफोर. मतलब कामाविंगा को उस तरह उस हाई वर्क रेट के लिए नहीं नजर आया, सिर्फ इब्राहिम की यूटिलाइजेशन थी. एंड एज वी स्टार्ट game number 3, the final game that decides who goes to the final of Dew Gamers Arena FC24. Well, Derek, confidence plays such a major part in football. Yeah, हम देख सकते हैं कि दोनों मतलब compared to the first semi-final और इसमें दोनों players को बस जल्दी खेलना होता था. They were very quick to create those attacks and get into the opponent's box. इसमें both of them are more patient. They like to take and play accordingly. And that was a great chance for Ezan, and he goes 1-0 up early into the game and gets himself the lead. Sorry, Ebrahim. Ebrahim gets an early lead and has an edge over Ezan now. Now it's up to Ezan to see how he responds. Dembele on the ball. Ezan is now on the back court, and it's the third game. There is no going back.
This game और इब्राहिम ने इतनी early on अपने लिए एक lead cement कर ली है, and he's trying to look for another as he finds a pass on towards that left wing, trying to look for another opportunity. Does he go for a shoot? Goes for a ball roll, but it is saved really well by Mike Minan, and Ibrahim is not able to capitalize on the lead he has already built so early on. Yeah, इस गेम में एक चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ कि दोनों players हैं वो ज़्यादा impatient हो रहे हैं. They're very quickly building up those attacks instead of जैसे हमने पहले दो games में देखा, both of them were taking their time. लेकिन इसमें हम देख रहे हैं कि दोनों बहुत quickly खेलना चाह रहे हैं. They're trying to get those goals in early. Maybe that is a good strategy after all, trying to look for, trying to catch it. हमने भी देखा था कि पिछले क्वालिफायर 1 के गेम्स में किस तरह उमर जान जो थे वो मीट करने की कोशिश कर रहे थे, and it might have caught Abdullah off guard once or twice, but the third goal was ready, and we see it over here as well. There are cheeky plays coming on, but both the players are critical and both the players are ready to face it as Ezan goes for an opportunity inside the box, and it is a goal for Ezan as he makes it 1-1. Both the players scoring a goal with Mbappe. It's back to square one. It's 1-1. Yeah, both players got that goal in within the first 16-17 minutes, and दोनों का एक हो चुका है. इसमें you could even say कि थोड़ी दोनों की nerves kicking हो रही हैं because the composed defending पहले दो games में काफी दोनों अच्छा से कर रहे थे, but this getting a goal in very early. That could be due to nerves, or maybe they're just trying to play that risky type of football now. He scores again, makes it 2-1. It's end to end, and it's Rabiot with the goal as he makes it 2-1 for the favor of Ebrahim. और हम यही बात कर रहे थे किस तरह ये लोग इतनी end to end game खेल रहे हैं. They're taking no time to develop plays. They just want to fire and they want to go for the shoots. They want to go for any opportunity that they can find whatsoever. ये दोनों बहुत quickly खेल रहे हैं इस game में. They are not wasting time. Both of them just want to get themselves into the final, and you can see that by the way they're playing in this match. Oh, nice ball. बिल्कुल एक opportunity ढूंढते हुए जा रहे हैं जहाँ पर उनको through ball मिलती है, मौका मिलता है, and he goes for a pass. But it is fed off well and it goes outside for a corner for Ebrahim. Again, he's got another opportunity. Can you do something with the ball with your possession? As he passes it on, and it is a goal as Ebrahim makes it 3-1. Ezan unanswered. He has no answer for what Ebrahim has done in the first 20 minutes. Final game that decides who goes to the final of Dew Gamers Arena. Oh, great vision. Very Saliba's defending a lot in this game, but now we can see him scoring a goal as well. Here गोल की बात करते तो एजान ने गोल कर दिया है 3-2 now. This is an absolutely brilliant match. दोनों एक दूसरे को चैलेंज करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी भी इब्राहिम के पास लीड है और इब्राहिम is going to take a break as he changes his setup, as he changes his team. He wants to park the bus. He wants to go home. He wants to take a pill of victory and wants to go to the final. Yeah, Ebrahim को कुछ नहीं लेने. He has been playing very quickly and the sort of risky football again. You could maybe see him be a bit more careful again now. Oh, and hopefully that plays out in his favor, because as you could see in the last game, he tried to be too careful and that actually backfired. बिल्कुल, और मतलब हमने पिछली दो गेमें इनकी देखी थी जिनमें they had very slow start. They were trying to make plays, और अभी हम देख रहे हैं पहले 30 मिनट में 5 गोल स्कोर हो चुके हैं, and I don't think they're gonna want to stop right now because Ebrahim is trying to look for another and make it 4-2, और वो विंग पे प्ले बनाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कोई पास नहीं वैसे as he tries to find an opportunity on towards that middle box, but Ezan is able to defend it really well and he wants to go for a counter immediately. No space. It is end to end, and Ezan is trying to make it 3 as fast as he can. This game has been very, very entertaining to watch, or
पहले ही हमने 30 minutes में 5 goal देख लिए. I could even see 6, Are getting 7, close to the 8 half-time goals break, being and scored the into visitors the find match. themselves And I'm behind. really looking Stuart, forward to what have seeing you how made of this this? match ends. Well, what a Both first players half just this has wanting been. We've had very, everything. very eager But to get unless into they the start final defending with more and urgency, face they'll concede more Abdullah, goals who here. is They've just been already too easy to play waiting against. to see who he faces. The ball in possession hai, and he's gonna try to make Close. another play. Dembele Just to on the make ball. it and Fine work from take it to France to win back 3-3, possession. make it further. But it seems like Ebrahim is calm. He's collected. He knows he's got the lead. He knows Released that it all nicely. he has to do is defend the ball well. But he might not have an answer as Ezan Getting tries to go stuck for an in opportunity. defensively. Beautiful through, but he's unable to do anything as Ebrahim intercepts it really well. Those defensive changes that he's made are coming to his aid. Those Coman. defenders that he Well, has they're a bit are like a coming to help passing him out. machine, and you can understand why they want to play it that way, in front as they are. Mike Maignan. अच्छा जैसे कि हमने देखा है यहाँ पे अभी थोड़ा गेम थोड़ा फाइनली जाके स्लो डाउन हो गया है एंड Coman. इट वाज क्या कहते हैं थोड़ा जिस तरह दोनों के काफ़ी डायरेक्ट अटैकिंग खेल रहे थे अब दोनों थोड़ा स्लो डाउन हो रहे हैं they're being a bit more careful they Now can't just Griezmann. let those goals in like that or Kylian Mbappe. I still expect it to be a high scoring match considering this what is at stake लेकिन Well, it didn't happen for here them is in Ezan time. with a good chance, but it was blocked off, and No now more time Ebrahim has a left. chance We've to reached the halfway mark counter-attack. here at the Orange Velodrome. And that final Well, the half verdict's on. over. अब इन प्लेयर्स के पास सिर्फ 45 मिनट हैं. ईजान के पास सिर्फ 45 मिनट हैं to score an equalizer and maybe, just maybe, go for a winner. Because this is all about that final spot. This is all about facing Abdullah in the final. This is all about 1 So million into the PKR second worth of half, prize can pool France for bounce the back winner. after that first 45? Goes to the final and wins there. Yeah, I feel like surprise pool to obviously it is a very good amount. Lekin uske alawa they want to submit like Pakistan esports industry as well. William They want to Saliba. be the best. They want to show everyone why they are the best, and And it a is struggle more for than just France to money. keep the ball. जो यहाँ पे stake पे है, it has to do more than just money. बिल्कुल अभी एक अटैक देखते हुए नजर आ रहे हैं. Mbappe! Full marks to the keeper. Well, what a reaction from the goalkeeper. Such a good save in the end. Or now he's on with the opportunity of the corner, but is unable to do really anything He'll from have a there. go here. He still has the ball in Well, the possession shot as he looked goes for a promising, shoot, but the keeper but had it the is measure saved of by it. Mike Mainan. As now it's on to Ebrahim. He's got 40 more minutes. He needs 40 to minutes clear that it. matter a lot to him because right now he's got the lead and all he has to do is cement it and keep Koundé. it to him Well, it can be and so he difficult to play has against a to confident finish the game passing off. team when you're trailing. Maybe look for another. Yeah. Maybe look for a set. With a touchline for what will be a France throw. Yeah, Ibrahim just has to be careful this half. क्योंकि पहले half में तो he could take that Chouameni. risk and he could have Dembele on the ball. put that when he knows कि he has the lead. He just Good has move to in the see this making from game out France. किसी तरह. And you can see that कि उसके Dembele. सारे players में track back करना शुरू हो गए This हैं could screw and the they're all game. coming to And defend. the keeper has his say. And now Coming puts back to it defend, and that Dembele. helps him Great really steal well of because pace. Mainan is Well, able that to was a save big chance, Ezan and really, he should have and taken that. Ebrahim But let's immediately give prompts a credit to the pause because goalkeeper. he It's a wants to decent take save. nothing of sort. He wants to make sure that Ezan Oh, tremendous feels vision. the pressure of it all. As now he's got another opportunity Yeah. on towards that right wing side. It's in. They're looking really relaxed and confident. And Ibrahim ends up scoring. He ends up getting that fourth goal. He 2-goal advantage once again. It so far looks like he has 1 foot into the final. This game is his to lose, and it is up to Ezan to respond to that now. Bilkul, Ibrahim, after scoring the goal, wants to take it easy, wants to take it slow. It's all on Ezan and what he wants to do. It's all on him. He has the opportunity to figure out what he has to do and how he has to score the next to be back in the game, to take it to extra time and, do something And not that giving will the opposition much of a look to in. go to the finals for DGA. The current Because as of right scoreline, now, it seems 4-2. like he is ready to book his ticket. Yeah, Koundé. इस गेम में हमने देखा कि wing play And काफ़ी given अच्छा है away. compared to previous FIFAs क्योंकि this goal came from the wing as well. 30 It was minutes created left for from the play. wing. जिस तरह हमने देखा कि lob through pass पहले दिया था Mbappe को and then it was just played from Koundé. there into the middle. And
I would say Ibrahim has been using that very well. Bilkul, and Ibrahim Good currently ball to has the switch the possession of the play. ball with himself. He's just trying to take things easy. He's trying to take things slow, trying to Kunde. find any sort of pass that might help him Chouameni. out, in trying to hold his 2 goal lead. Because again, it's all about that grand final spot. And he can feel it, he can sense it, Upamecano. and he wants it more. Jules Yeah, Ibrahim Koundé is on the just ball. passing it around the back, playing very Well, potential carefully, danger. taking no risks. He knows all the time, and he does not even need to take those Chouameni. risks now. Well 2 goal timed lead, tackle. काफी comfortable हो जाती है unless he ends up conceding, which you never know. There's Can they still take 25 odd advantage? minutes to go, and that is more than enough time for Diaby. Ezan to make a comeback. And playing it back. And that is exactly what Ezan is planning on doing as he Textbook goes for defending an inside the opportunity. He box. tries to find someone there, but Ibrahim is able to fend it off really well. And he Oh, is what a now top-notch back pass. to square one. Ezan tried to find an opportunity Griezmann. over there, but it did not come to fruition. As now And it must Ibrahim favour the has cross. another chance, but the pressure from the defenders is too much. But he Kunde. still holds the possession of the ball. He's got the And opportunity, clears the danger. The but conditions Izan look is able to pretty fend good it for off the really counter, well. And Ezan. again, it's not a matter of how they're defending or not. It's a matter of how well they're attacking. And it seems like Ibrahim has just had that Upamecano. slight edge over Izan through and through, this game. Last game we And saw here's Izan having Saliba. that edge, but again, it's all about how Kunde. well you read your players and how well adapt to the changes that the other player is trying to make. And it seems like Ibrahim really knows the status quo and he knows exactly what to do. Chouameni. Well, possibilities in the Yeah, centre. Ibrahim ने देख लिया था कि Ezan ने किस तरह खेला the second game and how he countered Ibrahim उनके जिस तरह play style वगैरह उनका, and then he's made changes according to that, and it's playing out very very well for him. So all for it noticing that. Bilkul, and they're just giving a pause. They're just relaxing. It's a game of nerve, game of the controller at hand and the players that you have. At the end of the day, the game matters on how good your nerves are, and that is exactly what these players want to do. They want to relax, relax their nerves because it is game three. It is the final game. It is the game that will decide who goes to the final, and nobody wants to take a risk. Ibrahim with a 4-2 lead, and Izan who has to score to equalize is they're both contemplating Well, on what, and it seems like Ibrahim has the opportunity, he has the chance, he is you know trying to just cement himself as he's decreasing his high line, as he's bringing his players back. We saw him substitute an attacker for a defender. That is all he wants to do, and exactly what he's planning to do. Yeah, he knows he has one foot into the final. उसको बहुत बस carefully हुआ था. He does not need to take any risk. बल्कि जितना defensive हो सकता है Ibrahim, he will probably be as defensive as he can be. It's only about 20 more minutes to go, and he has a 2 goal lead which he needs to defend. And harried into I losing the think ball. Really effective passing. that he has Well, all France the have controlled capabilities, possession, as you can but at the see. same Yes, time, they've you played well cannot when take going Ezan forward, but out it's of the been their game. ability to जिस तरह regain हमने the देखा ball लास्ट गेम that's में made he them won so hard to play 2-0 against और here, उसने and it makes them such a इब्राहिम good की team. It's been a abilities brilliant को आराम performance से so far. देख के काउंटर And किया threading था, it and he through. could do the same again this match. Ibrahim की ability की Oh, बात it's a करें, he's able terrific to cut out the challenge. play really well, and he had the ball at the box, but it is defended well by Chouameni. Izan and his players. As now Izan tries to look for Mbappe. an opportunity, goes to the ball, It's with but Kingsley strikes Coman. back with it, and is now trying to find an opportunity towards that wing side, and he does, but And it's possession lost intercepted by really well by France. Jules Koundé of Ibrahim, who will now try to just take his time, not make any Well, mistakes, we're not inside take the any final risk 10 whatsoever, minutes because in it's this one. the 80th minute of the game, and he's got the lead, and all he has to do is maintain this lead, and that is exactly what he plans on doing. Yeah, अब हम देख रहे हैं कि एजान जो अपने players Kunde. forward commit करना शुरू हो गया. He started to do Might be that able to because set he up the knows he has chance. 2 goals to score within the next 8 minutes. Mbappe. And Ibrahim is taking advantage of it, and he's using all that space Hernandez. behind him with the pacey players for Well, they kept France, their shape defensively. creating Job done chances, for but now. while being careful at the same time because he does not want to give the ball away cheaply. Goal, and Ibrahim is just tracking back because उसको पता है उसके पास 2 गोल्स की लीड है. And वो the pass क्यों was just that कोशिश little करे bit कुछ off. करने की, वो क्यों Nearly कोशिश found its करे कोई target. गलती करने की. Why take a risk? You're already He in the was in front the seat of right the bus. place You are to driving the bus. intercept. You don't really need to
go for any force Counter-attacking majeures chance. because either Ezan पे pressure to lead and he is comfortable with it because we're at the 82nd. Ezan has no Possession answer. one. Team who seems like he's going to cement his final spot because we're in Decent the looking 80th pass. minute. But there is an attack coming in from Ezan. End He's trying credit to of look for an Pepe. opportunity. He's trying to find anything that he can. But Well, they can't it quite is take advantage intercepted in the by end. Ibrahim, and Danger still Ezan is on. left Well, helpless that's really because we're in untidy. the 90th And it minute and it goes and seems like it's tightens things up. going. They've But found there themselves is a a goal lifeline. and it's 4-3. Ezan has an opportunity. Can he do something? Ibrahim The will final not whistle, allow and the him. He long and will not short even of give it him a is they've chance frittered as away 3 Ibrahim takes points, it and now and there's he's clear going daylight to the between. final of View Gamers Arena to compete against Abdullah for the prize pool of 1 million PKR. An entertaining set of matches these three were, all three of them, especially the final. The way Ibrahim played this match and played it out while Ezan trying to counter that, but he tried his best. In the end, got one goal as well, but he just did not have enough time to get another one in. Bilkul, and he woke up a little too late because now Ibrahim is into the grand final and his opponent will be Abdullah, who's already beaten Umar Jan. And that in itself is an achievement considering how that man is FIFA heritage. And now it's a grand final. The bracket has been set, the players are ready, and it will be an interesting sequence to see Abdullah and Ibrahim compete against each other. I feel like it would be a great matchup now between Abdullah and Ibrahim because Abdullah का हमने देखा है कि he likes to play very quickly, like with those attacks बहुत जल्दी जल्दी में उसको goals करने का शौक होता है. On the other hand, Ibrahim, he just tries to build up slowly और वो थोड़ा आराम से खेलते हैं, तो it kind of balances it out perfectly, and it will be a great final which I'm looking forward to. Bilkul, and we can't wait for you guys to be a part of the final as well. As from all over Pakistan, all of these players have participated, and out of the hundreds and 200s of players that took part in FIFA, there remain only two. One of them being Abdullah, one of them being Ibrahim, and that matchup in itself is going to be a crazy one for the books because that will decide who the best FC24 player in Pakistan is. Yeah, I'm just really looking forward to it. I can't wait for Abdullah and Ibrahim to face each other and seeing who takes the 500,000 rupees home. Ezan as well as Umar, they played very well, but they just could not get the best of their opponents this time. Bilkul. And again, this was a great set of games. Qualifier number one and qualifier number two, both entertaining in their own selves. As now we come to the end of the FIFA qualifiers. My name is Arith Al Kareem, and I was joined by Maz, and we will see you next time.